पुरुकुशलदायिनौ बोहीन्द्रशायिनौ पुरुकुशलदायिनौ पुरुषं शाश्वतं कलये 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 बोहीन्द्रशायिनौ वागीश गौरीश वागीश गौरीश वासवार्यमर वागीश गौरीश वासवार्यमर वागीश गौरीश वासवार्यमर वागीश गौरीश वासवार्यमर परिवाराविवन्दितपदं पद्मनाभं वागीश गौरीश वासवार्यमर परिवाराविवन्दितपदं पद्मनाभं बोहीन्द्रशायिनौ पुरुकुशलदायिनौ पुरुषं शाश्वतं कलये बोहीन्द्रशायिनौ कलितनुति सन्यासि भजनानुगुणविहित सुललिता कारमहितम् कलितनुति सन्यासि भजनानुगुणविहित सुललिता कारमहितम् कलशुहर परिसरोज्ज्वल पद्मतीर्थादिखण्डिता शेषदुरितम् कलशुहर परिसरोज्ज्वल पद्मतीर्थादिखण्डिता शेषदुरितम् कलशोद्भवान्वित महेन्द्र त्रिकूटवरमलयाचलेन्द्र विनुतौ कलशोद्भवान्वित महेन्द्र त्रिकूटवरमलयाचलेन्द्र विनुतौ कलनमन वञ्जि माताण्डव माकलित काञ्चन विमानलसितं पद्मनाभं बोहीन्द्रशायिनौ कलनमन वञ्जि माताण्डव माकलित काञ्चन विमानलसितं पद्मनाभं बोहीन्द्रशायिनौ पुरुकुशलदायिनौ पुरुषं शाश्वतं कलये बोहीन्द्रशायिनौ पद्मनाभौ 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 So you might have noticed that it also, it actually, the song in praise of Padmanabha, Lord Padmanabha. Guru, I need you on stage for the next single. It actually also describes some of the history of the Thiruvananthapuram temple, Padmanabha Swami temple, where how the initial Vigraha was established by, there is a story of this one, how
There are several temples where Vishnu is actually depicted as lying on a serpent, right? So Ananta Shayanam, this is called. Padmanabha Swami is one of those famous ones. So how this Vigraha was established by a yogi or a sannyasi first, and then it grew, and then Kerala King Marthandavarma then built the golden roof and all that, and became such a huge pilgrimage center. Next one we have here.